પાંચ જિલ્લાને આજે સાવધાન રહેવું પડશે। જે પ્રકારથી આગાહી કરવામાં આવી છે વરસાદને લઈને સાથે 5 દિવસ ભેજ અને બફારો ગરમી વધારી શકે છે તેવી પણ આગાહી। અમદાવાદની જો વાત કરવામાં આવે તો 38 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા જોવામાં આવી રહી છે। આ વખતે ચોમાસું વહેલું બેસી શકે છે। 28 મેથી 4 જૂન વચ્ચે કેરળ કાંઠે ચોમાસું બેસી શકે છે। ચોમાસા અંગે અંબાલાલ પટેલની આગાહી। अंदमान और निकोबार टापू पर असर देखाशे। आवतीकालथी टापू पासे प्री मॉन्सून एक्टिविटी जोवा मळशे। 24 मे थी अरब सागर में हलचल जोवा मळशे। ચોમાસું વહેલું આવવાની શક્યતા છે। તારીખ 13મી મેથી જ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી આંદામાન નિકોબાર ટાપુ પર થવાની શક્યતા છે। કદાચ જો હવામાનમાં ફેરફાર ન થાય તો 28 મેથી 2, 3, 4 જૂન વચ્ચે કેરળ કાંઠે ચોમાસું આવવાની શક્યતા રહેશે। પરંતુ હવે ધીરે ધીરે વરસાદની શક્યતા પણ વધશે અને લગભગ 24-25 મેથી 4 જૂન વચ્ચે અરબ સાગરમાં હલચલ શરૂ થશે। લો પ્રેશર થવાની શક્યતા રહેશે અને આ લો પ્રેશરના કારણે કદાચ ચક્રવાત થાય તો પણ વરસાદ થવાની શક્યતા लगभग गुजरातना કેટલાક ભાગોમાં રહેવાની શક્યતા છે। સૌરાષ્ટ્રના 5 જિલ્લા આજે સાવધાન। સૌરાષ્ટ્રના 5 જિલ્લામાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। હવામાન વિભાગની વરસાદ અંગેની આગાહી। આજે જૂનાગઢ, રાજકોટ, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, પોરબંદર અને દીવમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। તેજ પવન ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। 40 થી 50 કિલોમીટરની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે। તો રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા રહેશે। ગુજરાતમાં હજુ 3 દિવસ કેટલાક ભાગોમાં વરસાદ થઈ શકે છે। આવતીકાલે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વરસાદની આગાહી છે। તો વરસાદની સાથે બફારો પરસેવો છોડાવી દેશે। 5 દિવસમાં તાપમાન 3 થી 5 ડિગ્રી સુધી વધી શકે છે। તો આજે અમદાવાદમાં 38 ડિગ્રી તાપમાન રહેવાની શક્યતા છે। અમદાવાદમાં આજે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। आने वाले 3 दिनों के लिए गुजरात रीजन और सौराष्ट्र में लाइट टू मॉडरेट रेन का पूर्वानुमान है। और आज डे 1 की बात करेंगे तो आज के लिए जो थंडरस्टॉर्म की वार्निंग है जिसमें विंड की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर गुजरात रीजन और सौराष्ट्र रीजन के और कच्छ के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं। और हैवी रेनफॉल वार्निंग की बात करेंगे तो आज के लिए सौराष्ट्र रीजन में हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में विंड की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर और येलो अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, गिर सोमनाथ और पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट शामिल है और साथ में दीव शामिल है जहाँ पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में जो विंड की स्पीड होगी वो 40 से 50 किलोमीटर पर आवर साथ में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग होने का पूर्वानुमान है। अन्य महत्वपूर्ण समाचार की बात करिए तो ચોમાસાના આગમનને લઈને મોટા સમાચાર। દેશમાં ચોમાસા માટે ખૂબ જ સાનુકૂળ સ્થિતિ છે। હવામાન વિભાગની મોટી આગાહી। કાલે અંદમાન નિકોબારમાં બેસી શકે છે ચોમાસું। છેલ્લા 24 કલાકમાં નિકોબારમાં ભારે વરસાદ। હજુ પણ 24 કલાક ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ રહેશે। 4 થી 5 દિવસમાં અરબ સાગરમાં પહોંચી શકે છે ચોમાસું। In the current standoff, the presence of an aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Karel battle group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई 100 किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। Over the past few years and most importantly immediately after the cowardly incident by Pakistani sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity
to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify, and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. To sum up, the Indian Navy's dominance thus ensured that, should we choose to, we can strike at will. Thank you, Shabdon Varna, Jai Hind. May I now hand over to Director General Air Operations for further proceedings. Thank you, Pramod. I think a lot has been said, and I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। शुक्रिया दोस्तों, और यदि कोई अभी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए। Second, ladies and gentlemen, like yesterday, I'll request you to raise your placards, which most of you are doing. Again, repeating it, anything which is confidential in nature will not be responded to. And as you are aware, the DGMOs, all three of them, have got an important assignment after this, which you also are very well aware of. So we shall not be taking too many questions today. I started with both the ends yesterday. Today I'll start from the center, 237. 237. And I'll request you to please maintain, I'll ask you, I'll come to you. हेलो हेलो सर, मैं आवाज़ आ रही मेरी? हेलो सर, मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू होने के ठीक पहले एक वीडियो हमने स्क्रीन पर देखा जिसमें राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कृष्ण की चेतावनी की प्रमुख पंक्तियों को उद्धृत किया गया और सीधे सीधे दुश्मन को ये संदेश दिया गया कि याचना नहीं। मधुरेंद्र, मैं न्यूज़ नेशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने के ठीक पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जो कृष्ण की चेतावनी है उन पंक्तियों को सामने रखा गया और कहा गया कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। कल शिव तांडव स्रोत के जरिए दुश्मन को संदेश दिया गया था और आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इन प्रमुख पंक्तियों के जरिए ये किस तरह के डिटरेंट को क्रिएट किया जा रहा है, किस तरह के मैसेज को दिया जा रहा है, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके अगर आप बताएं तो जाहिर तौर पर ये संदेश और व्यापक तौर पर जाएगा। और एक छोटा सा सवाल मेरा यह है कि ड्रोन अटैक को लेकर जो बातें सामने निकल कर आई हैं, एक बहुत हाइप क्रिएट था टर्किश ड्रोन को लेकर, TB2 और उसके तमाम ड्रोन को लेकर। ऐसा लगता है कि वो हाइप और ओवररेटेड ड्रोन जो है वो भारत में धराशायी हो गया, एक मैसेज दुनिया को चला गया कि अब हाइब्रिड वॉरफेयर में इसकी औकात नहीं बची है। ओके, ऑल राइट, ओके, थैंक यू। आपने क्या नाम बताया अपना और किस एजेंसी से हैं? न्यूज़ नेशन से। बहुत अच्छा लगा आपकी हिंदी सुनकर और हिंदी कविता सुनकर। तो मेरे कलीग ने अभी बताया, आई थिंक आई मेंशन्ड यीहा टू बी चाइनीज origin. I would like to correct myself. The Yeha drones are of Turkish origin. So that comes to your question. All right. चूंकि आपने शुरू किया श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से, हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं, और क्या संदेश दिया जा रहा है, तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। और जहां तक ये ड्रोन, टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रैकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो।
हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। धन्यवाद। All right. 226. Sir, Aditya Raj call from TV9 Network. Yesterday, the DG ISPR came out with a press conference, and while you have been continuously providing satellite images and proofs, undeniable proof really, of the airstrikes that happened and the damage that is caused, there's no evidence coming in from the other side. What do you think is there? Are they trying to bluff their people? Are they trying to build some kind of a propaganda for the anger that domestically is there in Pakistan? And secondly, related question, you mentioned Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Toiba terrorists. The brother of Maulana Masood Azhar, Rauf Asghar, who was killed. Pakistan DG ISPR is trying to build a propaganda where he's saying that Lashkar-e-Toiba, Rauf from Lashkar-e-Toiba was at the entire funeral, but he's saying that he's alive, and they're trying to confuse the people because the two names are similar. The Jaish chief, who is the brother of Maulana Masood Azhar, and the Lashkar guy who was with the Pakistan army at the funeral. So could you clarify what has really happened? Because there is a lot of propaganda and information warfare happening from the Pakistan side. Thank you. I think the first part of the question you have answered yourself. I need not delve more on it. Why they are doing what they are doing, information is not forthcoming from there. Obviously, that is expected, and they would do whatever it takes to assuage their people and minimize whatever information about the damage comes out. Here, I would like to clarify, as I said yesterday, our fight is with the terrorists. Our fight is not with the Pakistan military or Pakistan civilians. So that is very clear, and we are very clear in our targeting. So coming to the second part of your question as to what media or what propaganda spin the other side is trying to make out a story. Well, it is for them to answer, and it really is not a military question for us to answer here. We've done our job, we have done what we are expected to do, and that is it. I'll come this side, 249. सर, मैं पूनम पांडे हूँ नवभारत टाइम्स से। पाकिस्तान ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें एक सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया था कि दिस इज़ न्यू आर्ट ऑफ वॉर। तो हम सब ने देखा, शायद पहली बार देखा कि किस तरीके से आसमान में दोनों एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट थे। क्या आप बता सकेंगे, क्योंकि हम जो लगातार जब कवर करते हैं हम देखते हैं 2016 में के बाद ड्रोन का जो पूरा वॉरफेयर में रोल है वो दिखा था, तो हमने भी वो दिखाया, और किस स्तर की ये वॉर थी? अगर थोड़ा आप क्लैरिटी दे सकें कि कितने एयरक्राफ्ट उनके इन्वॉल्व थे, लगभग कितने हमारे थे, क्या इसे अब तक का सबसे बड़ा जो जंग हुई है आसमान में वो कहा जा सकता है, और ड्रोन के रोल पे थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि 2016 के बाद जिस तरीके से बढ़ा है। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था, and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज़ अ कैट एंड माउस गेम, एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी।
So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it, we were trained for it, and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. Thank you. Ladies and gentlemen, the last question, 161. Hi, sir. Thank you, sir. Snesh Philip here from the print. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you so much. As I said yesterday, as I said earlier and yesterday, it is difficult to take everybody's questions, and the DGMers have to reach somewhere right now. So thank you for coming. Please send in your questions on paper. We will definitely answer them. Thank you. તો સેનાની પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં મોટી અને મહત્વપૂર્ણ બાબતો છે તે જણાવવામાં આવી છે. જે પ્રકારથી ભારતીય સેના છે તેની સાથે સમગ્ર દેશ છે અને તમામ ઓપરેશન કઈ રીતે કરવામાં આવ્યું તેની પણ જાણકારી આપવામાં આવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે ભારતીય સેનાએ કઈ રીતે પોતાનો શૌર્યનો પરચો આપ્યો છે તે પણ જણાવવામાં આવ્યું અને ડિફેન્સ સિસ્ટમ કઈ રીતે તૈયાર છે. આવનારા સમયમાં પણ જો યુદ્ધ થાય છે અને કોઈ પણ નાપાક હરકત પાકિસ્તાન દ્વારા જો કરવામાં આવે છે તો તેનો જડબાતોડ જવાબ છે તે આપવામાં આવશે. સાથે જ પાકિસ્તાનને કેટલા મોટા પાયે નુકસાન પહોંચાડવામાં આવ્યું તેની જાણકારી પણ સેના દ્વારા આપવામાં આવી છે.